हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। सो कल हमने बात करी थी व्हाट आर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं और क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन की रेंज होनी चाहिए। तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम 10 प्रॉपर्टीज के टर्म में पढ़ेंगे और वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, sin inverse sin theta is written as theta for all theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Second is cos inverse cos theta equals to theta for all theta belongs to 0 to pi. Similarly, tan inverse tan theta is written as theta for all theta belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. Cosec inverse cosec theta equals to theta for all theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Theta never equals to 0. Similarly, sec inverse sec theta written as theta for all theta belongs to 0 to pi, but theta never equals to pi by 2. Cot inverse cot theta equals to theta for all थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई. नाउ अब अगर इसे प्रूव करना है, सपोज उस आइडेंटिटीज को हमें प्रूव करना है, तो हम पहली आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ले लेंगे, तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं. अब लेट साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स. Now again put the value sin inverse in place of x, sin theta. We get the proof, and this is for all theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Similarly, you can prove other results also. तो इससे related हम एक numerical करते हैं. Suppose we have a numerical tan inverse tan 3 pi by 4 not equals to 3 pi by 4. Then find value of थीटा. तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, tan इनवर्स tan 3 pi by 4. हमें पता है कि 3 pi by 4 10 की रेंज में नहीं आता है, बिकॉज 10 लाई विद इन द माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2. तो हम इसे चेंज कर लेंगे, tan इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाय 4. तो tan इनवर्स 10 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स माइनस पाई बाय 4. तो also written as tan inverse 10 minus theta, because 10 minus theta equals to minus tan theta. तो tan inverse and 10 cancel out, answer will be minus pi by 4. The second question, cos inverse cos 7 pi by 6 never equals to 7 pi by 6. Then find the value of this. So we know that the value of cos lies between 0 to pi. So we can return cos inverse cos 7 pi by 6 is written as 2 pi minus 5 pi by
6 because cos 2 pi minus theta is again written as cos theta. So cos inverse cos 5 pi by 6. Cos and cos inverse cancel out. Remaining is 5 pi by 6. So your answer is 5 pi by 6. And 5 pi by 6 is lie between 0 to pi. Now one more thing should be noted. Sin inverse sin theta is written as minus pi minus theta if theta belongs to minus 3 pi by 2 to minus pi by 2 and is written as theta. ये हम पढ़ चुके हैं. If theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2 and written as pi minus theta if theta belongs to pi by 2 to 3 pi by 2. Similarly, it written as minus 2 pi plus theta if theta belongs to 3 pi by 2 to 5 pi by 2 and so on. तो ये हमारी क्या हो गई, कंडीशंस हो गई जिसके हम इसे डिफाइन कर सकते हैं. सिमिलरली हम कॉस को भी इसी तरीके से डिफाइन करेंगे. कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज रिटन एज माइनस थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू minus pi to 0 written as theta if theta belongs to 0 to pi and 2 pi by minus theta if theta belongs to pi to 2 pi and minus 2 pi plus theta if theta belongs to 2 pi to 3 pi. अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेकंड की. तो प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है, साइन इनवर्स एक्स इज रिटन एज एक्स फॉर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1. कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज रिटन एज एक्स फॉर मॉड ऑफ लेस देन इक्वल्स टू 1. Tan of tan inverse x is written as x for x belongs to all real numbers. Cot of cot inverse x is written as x for all x belongs to R. Similarly, sec inverse x is written as x for mod of x is greater than or equals to 1 and cosec of cosec inverse x is written as x for mod of x is greater than equals to 1. Similarly, इसका भी हम प्रूफ कर लेते हैं. एक फर्स्ट का हम प्रूफ कर लेते हैं. Let sin inverse x equals to y. That means x equals to sin y. Again, put the value of y, sin inverse x, you get sin of sin inverse x. So sin of sin inverse x is written as x within the interval minus 1 to 1. That means यहाँ पर इसी का मतलब क्या है कि mod of x is always less than equals to 1. Similarly, we can prove other results also. Let's try to solve a problem related to property second. So let's start. If you have sine of sec inverse 17 over 15, then evaluate the value of this. So firstly, we have sec inverse 17 by 15. Let this term is equals to theta. This implies that 17 over 15 equals to sec by this triangle M.
this is given hypotenuse is 17 and base is 15. Let this one is theta. To find the perpendicular is hypotenuse whole square minus base whole square. That means 17 whole square minus 15 whole square. 17 plus 15, 17 minus 15. We get overall P equals to 8. Now sine of sec inverse 17 by 15 equals to sine of sine inverse 8 by 17, perpendicular upon hypotenuse. So sine and sine inverse cancel out, the remaining 8 by 17. The value of this is 8 by 17. One more example. Cos of cot inverse 15 by 8. So again you get triangle and cot theta equals to, ये फॉर्मूला आपको 10th क्लास में सबको पता है, साइन कॉस tan then base upon perpendicular. So this one is theta, perpendicular is 8, this one is 15 base, so then hypotenuse is 17. Now cos inverse 15 by 17 base upon hypotenuse. तो cos and cos inverse cancel out, result is 15 by 17. और आपकी जो भी वैल्यू आएगी तो आप ये नोट करना कि ये जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल्स टू 1 आनी चाहिए. अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. टुमारो वी विल डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 3rd, 4th एंड 5th.